Good evening everyone, welcome to EduTap and welcome to another important CT360 series session in which we cover the important G and ESI current affairs from the examination point of view. And today my dear friends, we will be covering the important current affairs from 29th to 31st of May 2025. And if I'm audible and visible to all of you, please give me a thumbs up in the chat box so that we can start with the today's session. So I'm waiting for your responses in the chat box. So good evening Sushmita, Shanika, Kritika and all other people who have joined us live today. Let me tell you my dear friends, if you are preparing for RBI, NABARD, SEBI or other banking examination, wherever the current affairs has been asked, then these sessions are going to be very helpful for you because in these sessions we are covering the important G and ESI current affairs. Okay? And let me tell you that wherever, if you are preparing for any other exam except these exams and the current affairs has been asked, then again these sessions are going to be very helpful for you. And let me tell you one very important point that in these sessions, we basically cover these news resources like PIB, Economic Times, The Hindu, Lyman, Business Standard और यहाँ पर PIB की एटलीस्ट आपको पूरी कंप्लीट कवरेज देखने को मिलती है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द PIB, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, यहाँ पर आपको उनकी कवरेज देखने को मिलेगी. ठीक है. सो इस सेशन के अंदर सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं अपना प्रीवियस सेशन कवरिंग द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रीवियस सेशन थ्रू अ स्मॉल क्विक रिविजन. We then follow it by covering the important current affairs of the given dates and then we follow it by solving the MCQs. So this is the complete structure of the current affairs session that we are conducting. Okay. So यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आज के सेशन में what exactly we are going to cover, we are going to cover these 10 news articles today. And here, if you are preparing for a regulatory body exam like RBI or the NABARD, let me tell you that वहां पर there are some articles which are related to your syllabus, which are not related to your syllabus. The articles which are related to your syllabus, they are important for both phase 1 and phase 2. For example, Swachh Survekshan Grameen, full functional literacy attained by the Goa, Mini Ratna category 1 status, 100 billion FDI into India, right? After that, there are some articles which are only relevant for phase 1 because they are not directly related to the syllabus. So basically, these are the articles which are only relevant for phase 1. But the above articles are important for both phase 1 and phase 2. Okay. Apart from that, अगर आप एक बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका सिर्फ फेज 2 के अंदर ही करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं. सो दैट्स व्हाई ऑल द आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर फेज 2 एग्जामिनेशन. ओके. सो अभी हम रिवाइज करेंगे अपने पिछले सेशन को एंड वी विल आइडेंटिफाई वेदर यू आर एबल टू रिटेन ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रीवियस सेशन और नॉट. And here is the very first question for all of you, which is on global report on food crisis. The first question is basically it has been published by which organization along with FSIN, that is Food Security Information Network. Can anybody tell me what is the name of that organization which releases the global report on food crisis? I am waiting for your responses in the chat box. So please try to tell me the right answer here in the chat box. So yes, I can see in the chat box people are telling GNAFC. Absolutely right. Global Network Against Food Crisis. This is the organization which releases this report along with the Food Security Information Network. Now, according to the report, the next question is how many people across 53 countries experienced acute food insecurity? What exactly was that number? That number was 295 million. And that is the data that we have covered in the previous session. Okay. Now, the third important part, we discussed the key drivers of the food insecurity according to the global report on food crisis. Now you have to tell me here that the top key driver which was responsible for the major food acute insecurity across the world. So what exactly it was? It was the conflict. That was the top driver. And how many people have been impacted due to the conflict in 20 countries? That is the third question from the same report that I would like to ask here. So again, I can see in the chat box, people are saying that yes, it is 140 million. Absolutely right. So the people who have given 140 million is absolutely the right answer. You can mark +1 for your examination. Okay. Moving to the next question. So the continuation of MIS scheme. I told you to remember MIS case 7134, right? So यहाँ पर MIS, that is Modified Interest Subvention Scheme, was being continued by the cabinet, right, with the existing dash percentage of interest subvention. So what exactly it is? It is of 1.5%. And after that, farmers avail short-term loans. Short-term loan कितने amount तक का मिलेगा उनको? That is up to ₹3 lakhs.
₹3 लाख का लोन इनको मिलेगा। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर। आई होप कि यहां से आप सभी चीज आइडेंटिफाई कर पाएंगे व्हाट एग्जैक्टली इज द राइट आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित कृषि संकल्प अभियान को शुरू किया गया फ्रॉम विच प्लेस ऑन 29th of May? दिस अभियान विल बी टेकिंग प्लेस फ्रॉम 29th May टू 12th of June। 29th May से 12 जून तक ये अभियान चलाया जाएगा जहां पर फार्मर्स को अवेयर किया जाएगा, राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली इज द प्लेस फ्रॉम वेयर इट हैज स्टार्टेड? इट इज पुरी इन ओडिशा। दैट इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश लॉन्च्ड 2 डिजिटल इनिशिएटिव्स, नो योर डिजिपिन एंड नो योर पिन। सो नो योर पिन को नो योर डिजिपिन किसने लॉन्च किया था? Which or department has released and it is under which ministry? It is a Department of Telecommunication under the Ministry of Communication. Department of Telecommunication under the Ministry of Communication, which has released these 2 digital initiatives to modernize India's addressing system. Okay, so everybody is clear with this. Moving to the next set of questions, Dash is a next generation 2-seater electric trainer aircraft. तो वो 2-seater इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो इंडिजिनसली मेड होगा एंड इट इज गोइंग टू बी अवेलेबल एट हाफ द कॉस्ट इन विच वी बेसिकली इंपोर्ट द ट्रेनर एयरक्राफ्ट फ्रॉम अब्रॉड. व्हाट एग्जैक्टली इज इट्स नेम? दैट इज E-Hans. E-Hans is the right answer. Moving to the next question, Navik Sagar Parikrama 2 has been completed and under this 2 women officers circumnavigated across the globe. What is the name of these 2 people? That is what you need to tell me here. So these are Lieutenant Commodore Rupa and Dilna K. So this is the right answer. Okay, so these are the 2 officers. Moving to the last question of the today's session, you have to tell me the name of the person who has created a history of creating a new world record in the men's F42 javelin category. What is the name of this person? The name of the person is Bharat Gurjar. Is the name correct here? Please tell me here. Have I told you the name correct? Please tell me. Right answer is not. I have told you Bharat Gurjar. It is not Bharat Gurjar, it's Mahendra Gurjar. That is the right answer. Okay, so these are the important part. और अगर आप सभी ने इन क्वेश्चंस के सही आंसर किए हैं तो आप अपने स्कोर कार्ड में +1 मार्क लगा सकते हैं कि हमारा एक सेशन अच्छे से कंप्लीट हुआ, हमने सारी चीजों को रिटेन किया, हमने अच्छे से चीजों को याद रखा. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और अब हम रिवाइज करेंगे, अब हम कवर करेंगे अपने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम द टुडे सेशन. ओके, एंड टुडे द वेरी फर्स्ट न्यूज आर्टिकल इज स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025. My dear friends, we all know that every year on 2nd of October, that is on the occasion of Gandhi Jayanti, Prime Minister gives a very beautiful speech about the cleanliness. On the date on which the Swachh Bharat Mission was also been launched. And there we basically take a pledge that yes, we will be keeping our society, our villages, our surroundings very clean. And in order to assess that whether we are able to achieve the cleanliness in our rural areas, whether we are able to achieve sanitation, proper sanitation in the rural areas, this Swachh Sarvekshan Grameen is been launched. So the 2025 edition of the particular survey has been launched to analyze that whether what exactly is the performance of rural areas in terms of sanitation, how exactly they have performed in terms of sanitation. So India's largest rural sanitation survey, Swachh Sarvekshan Grameen, has been launched in Delhi. ठीक है, इसको दिल्ली से लॉन्च, दिल्ली के अंदर इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है. ऑब्जेक्टिव काफी इजी है. ये जो सर्वे है, इट बेसिकली हेल्प्स अस to provide a national ranking of all the states and UTs कि सैनिटेशन में किसकी क्या परफॉर्मेंस थी, उसके बेसिस पर सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को हम रैंक करते हैं. एंड दिस विल बी बेसिकली डन ऑन द बेसिस ऑफ अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सैनिटेशन पैरामीटर्स जिनको हमने आइडेंटिफाई किया अंडर द स्वच्छ भारत मिशन 2. तो स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के अंदर हमने इनको आइडेंटिफाई किया है और उसके बेसिस पर व्हाट एग्जैक्टली दीज पर्टिकुलर पैरामीटर्स आर, सो ये कवर करना काफी जरूरी है. नाउ फर्स्ट ट्राइंग टू डिस्कस अबाउट द स्वच्छ भारत मिशन फेज 2. So let me tell you guys that Swachh Bharat Mission phase 2 was basically been released. Can anybody tell me that when exactly it was released? In which year this particular scheme was been released? It was released in 2020. Right? अगर हम बात करते हैं phase 1 की, so in which year the phase 1 was been released? It was released in 2014. Okay?
So this particular scheme is basically about स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंदर हमने इसको लॉन्च किया, इस स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को. And this scheme we have already discussed in a very detailed manner in a separate session. So I just want all of you make sure that you are attending this particular session. ठीक है, जब ये PDF आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आप इस सेशन पर जाइएगा, and this session is going to basically help you out in covering all the key important details of this particular scheme. ठीक है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस स्कीम को कवर करना. एंड बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर स्कीम विच वाज रिलीज्ड इन 2020 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया गया था एंड इट वाज रिलीज्ड इन ईयर 2020. दिस वाज द फेज 2 ऑफ द स्कीम, राइट, जिसके अंदर हम बेसिकली मैनेज करना चाहते हैं कि जो ओपन डेफिकेशन फ्री हमने इंडिया को बनाया था उसको हम मेंटेन करके रखें, रूरल एरियाज के अंदर भी मेंटेन करके रखें. एंड देयर वर सम सर्टेन टारगेट्स. इस स्कीम की बात करें तो इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जहां पर आपका स्टेट का कंट्रीब्यूशन भी रहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी रहता है. ठीक है, सो जस्ट वांट ऑल ऑफ यू कि आप इस स्कीम को अच्छे से कवर करें और एक डिटेल वे में कवर करें. एंड नाउ कमिंग बैक टू द सर्वे. So this survey has been conducted under the Department of Drinking Water and Sanitation under the Ministry of Jal Shakti. तो इस डिपार्टमेंट के अंदर इसको कंडक्ट किया जाता है. 21,000 विलेजेस के अंदर इसको कंडक्ट किया जाएगा अक्रॉस ऑल द 761 डिस्ट्रिक्ट्स एंड इट विल बेसिकली हेल्प द कंट्री टू इंश्योर इट्स कमिटमेंट्स टुवर्ड्स क्लीन हेल्दी एनवायरनमेंट इन द रूरल एरियाज. ठीक है, तो रूरल एरियाज के अंदर एक क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट को ये बेसिकली इंश्योर करेगा ये पर्टिकुलर स्कीम. So I hope that this part is absolutely clear to everyone. Now moving ahead, अगर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण की हम बात करते हैं, it will evaluate the status of states and UTs and districts on the key performance outcomes of the Swachh Bharat Mission Phase 2. और उसके बेसिस पर there are some certain components across which these states and UTs are being assessed and what exactly these components are, they are really very important to be covered. ठीक है, तो क्या है वो components? So these components have been mentioned to you here in a detailed manner. So what exactly these particular components are? So these includes first the service level progress, then direct observation of the sanitation status of villages, direct observation of the functionality of sanitation infrastructure, SSG 2025 citizen feedback. तो ये 4 component हैं. अब service level progress में क्या होगा? Basically under this part we will be identifying that how much exactly the work has been done under the administration level. एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कितना काम हुआ है इन टर्म्स ऑफ दिस ensuring proper sanitation in the rural areas under these particular outcomes of the स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2. ठीक है, तो इसमें बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जो डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे वो अपनी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट सबमिट करेंगे, देन उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाएगा दैट वेदर these reports are genuine or not, whether exactly these work has been done or not. ठीक है, so this is under the first part, that is SLP service level progress. Then there will be direct observation of sanitation status of villages. Under this what exactly will be done? They will be basically doing a physical inspection of the villages. और villages के अंदर जो sample villages हैं वहां पर जो हमारे households हैं, हमारे public places हैं, community service centers हैं, schools हैं, they will be visiting these places to identify that yes, people are following the rules, there is no any open defecation here. And apart from that जो भी हमारे toilets हैं, right, जो भी infrastructure है, it is working properly there. Now the third part is the direct observation of functionality of sanitation infrastructure. तो sanitation infrastructure जो है हमारे उस village के अंदर वो कितना functional है, कितना operational है, that is being done. So that is focusing on plastic waste management units, Govardhan plants, fecal sludge management. So under the Govardhan plants were basically been established to convert the cow dung into the biogas. ठीक है, apart from that fecal sludge management system will be there in order to manage the human waste. And then the plastic waste management units. In this comes the 2 types of waste, that is the biodegradable waste and the non-biodegradable waste, which includes your plastic waste, right? So यहाँ पर उनका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा रहा है, everything will be catered under this part. Then we will be having the citizens feedback. तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के अंडर citizens का क्या फीडबैक है, what exactly they are saying. So उनके responses को मोबाइल एप्लीकेशन और one-on-one interaction के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा. Now across all these components we will be seeing that okay, what exactly is the performance of a certain district, state and UT, and then we will be ranking them
Okay, so now it is very important that right now just this survey has been released, तो उसकी डिटेल्स हम याद रखें। अब इसको कैसे याद रखा जाए कि सर्वे के कंपोनेंट्स को याद करना काफी जरूरी है। हम देखते हैं एग्जाम के अंदर कंपोनेंट्स पर क्वेश्चंस आते हैं, पैरामीटर्स पर क्वेश्चंस आते हैं। हाउ कैन वी रिमेंबर दिस? जस्ट रिमेंबर, फॉर द क्लीनलीनेस, हु इज द SPOC फॉर क्लीनलीनेस? ठीक है, here S stands for the service, जो भी सर्विस हुई है, जितनी भी सर्विसेज की गई हैं अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, उनके परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा। सेकेंड पार्ट इज द फिजिकल इंस्पेक्शन। फिजिकल इंस्पेक्शन जहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि सैनिटेशन स्टेटस कैसा है विलेजेस का। इन द थर्ड पार्ट वी विल बी डायरेक्टली ऑब्जर्विंग द फंक्शनैलिटी एंड द ऑपरेशनलिटी ऑफ दीज सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द विलेजेस, and then with the C we will be identifying what is the citizens feedback on the cleanliness. ठीक है, so your point of contact for the cleanliness will be SPOC. Just remember, for Swachh Survekshan Grameen, that is SPOC. So this is something which is going to help you out in remembering this particular part. ठीक है, another mnemonic for you in this particular class. I hope कि आपको ये एकदम clear होगा. If yes, please give me a thumbs up in the chat box that yes, everything is clear with today's this particular portion. Okay, so now let's move on to the next news article. So ये यहाँ की डिटेल्स आपको सभी क्लियर हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज आर्टिकल पे, that is Goa has achieved full functional literacy. So my dear friends, just 10 days back we have covered a news article in which we saw that Mizoram has become the first Indian state to become fully functional literate, and now Goa has become the second such state to achieve that particular feat, and it has been declared as a fully literate state under the Ullas नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, which is a new India literacy program. तो इसके अंडर गोवा स्टेट ने भी यहाँ पर fully अटेन कर लिया है लिटरेसी स्टेट को। ठीक है, सो विद दिस अचीवमेंट इट हैज बिकम द सेकंड स्टेट इन इंडिया टू अटेन फुल लिटरेसी आफ्टर मिजोरम। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, अगर किसी स्टेट को ये अचीवमेंट हासिल करनी है तो उसके लिए क्या पैरामीटर है? 95% का जो बेंचमार्क है वो उससे क्रॉस करना होगा। ठीक है, अभी अगर हम बात करते हैं PLFS रिपोर्ट पहले वाली जो 23-24 की थी, उसके अकॉर्डिंग जो गोवा का लिटरेसी रेट था इट वाज अराउंड 93.6%, व्हिच वाज आल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री, राइट। और जहां पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली दोनों मेल और फीमेल पॉपुलेशंस के अंदर। एंड नाउ फाइनली गोवा हैज अचीव्ड and breached that crossed this particular mark of 95% benchmark, and now it has become the full functional literacy state. The name is Goa. Please remember, first state was Mizoram, the second state is Goa. And let me tell you that we have already covered this complete article related to Mizoram in the CT 360 series session of 19th to 20th of May, right? Just 10 days back. Now moving ahead to this particular scheme, that is Ullas Nav Bharat Saksharta Karyakram. आई बिलीव कि आप सभी को ये स्कीम एग्जैक्टली याद होगी क्योंकि हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, तो आज भी थोड़ा अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। सो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इट मींस दैट देयर इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। द अदर वन इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम वेयर वी ओनली सी द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो इट इज इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 2022 टू 2027। तो 5 साल के लिए हमने इसको नोट डाउन किया था कि 5 साल के लिए बेसिकली ऑपरेशनल रहेगी। इट इज अलाइन विद NEP 2020 टारगेट्स, और किसको टारगेट करती है? एडल्ट्स हु आर एज 15 इयर्स एंड अबव, जो कि स्कूल नहीं जाते, ऐसे एडल्ट्स जो 15 साल से ऊपर हैं उनको ये टारगेट करती है अक्रॉस द 5 कंपोनेंट्स। अब ये 5 कंपोनेंट क्या हैं? दीज आर द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बेसिकली वेदर यू आर एबल टू रीड the short sentences, whether you can express by writing the short sentences, whether you can read and understand that particular language in which you are reading it. Apart from that, basic arithmetic skills क्या आप कर सकते हैं, यानी addition, subtraction, this is the foundational literacy and numeracy. Then there are some critical life skills, basic education, vocational skills which are basically related to your industry or market aligned skills with the help of which you can get any job. Then we are having continuing education, that means providing access to the library so that if there is someone who want to get more education तो यहाँ पर वो उसको भी एक्सेस कर सके। ठीक है, सो ये जो विजन था उल्लास स्कीम का was to make भारत जन जन साक्षर, तो सभी को हम लिटरेट बनाना चाहते हैं और इसीलिए इस स्कीम के अंडर भी काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए गोवा के अंदर।
and again this is become the second such state to become fully functional literate of our country. Now after that अगर हम बात करते हैं उल्लास स्कीम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेटा याद रखें. सो लेट मी टेल यू कि जो डेटा है आपका बेसिकली ये एक वॉलेटाइल डेटा है, इट कैन चेंज. तो अभी बस अंडरस्टैंडिंग के लिए वी कैन सी दैट ओके दिस इज द डेटा. सो अंडर उल्लास स्कीम मोर देन 1.77 करोड़ लर्नर्स हैव अपीयर्ड इन द फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी टेस्ट. ऑल्दो एग्जाम के लिए आपको याद नहीं करना है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कीजिए कि उल्लास स्कीम के अंदर कैसे वी बेसिकली गॉट दिस पर्टिकुलर रिजल्ट और गोवा, मिजोरम जैसे स्टेट्स कैसे अपने इस टारगेट तक पहुंच पाए. सो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करते हैं हमारे वॉलंटियर टीचर्स की, तो 2.37 करोड़ लर्नर्स एंड 40.84 लाख टीचर्स they have been registered on the Ullas mobile app. So a lot of population of our nation is taking the advantage of this scheme so that they can become literate. After that अगर हम बात करते हैं उस पर्टिकुलर पहली यूनिट की which become the fully literate in our country, it was Ladakh. तो लद्दाख को 20 जून 2024 को अनाउंस किया गया था that it has become first administrative unit to be declared as full literate. So this is something that we need to remember here. Okay, I hope कि उल्लास स्कीम इसकी की डिटेल्स और जो 5 कंपोनेंट है ये आपको याद रहेंगे. 5 कंपोनेंट एंड 5 years 2022 to 2027. 5 components: foundational literacy and numeracy skills, critical life skill, basic education, vocational skills and your continuing education. So these are the 5 components. I hope this is clear guys. बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज आर्टिकल पर, that is मिनी रत्ना कैटेगरी 1 status to 3 companies. So Defense Ministry has recently approved in order to give the mini Ratna 1 status to the 3 companies, and the name of these 3 companies are Munition India Limited, Armored Vehicles Nigam Limited and India Optal Limited. तो इन 3 कंपनीज को डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहां पर मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस प्रोवाइड किया है. अभी क्या है स्टेटस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड, तो इसको भी हम कवर करेंगे इन डिटेल मैनर. बट बिफोर दैट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दीज 3 कंपनीज. दैट पहले ये जो क्या था गाइस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था, राइट. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से 7 कंपनीज को निकाला गया, उसमें से 3 कंपनीज हैं जिनको अब विद टाइम उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियली बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दे हैव अर्नड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स एंड नाउ दे हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस. कब ये निकली थी यहां से, 2021 के अंदर ये कार्व्ड आउट हुई थी फ्रॉम द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड. तो इतना सा आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दिया है, राइट. अब बात करते हैं मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस की क्या होता है. तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ग्रांट करता है महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना स्टेटस. अभी मिनी रत्ना हमारा न्यूज के अंदर, तो मिनी रत्ना को कवर करेंगे. अब मिनी रत्ना के अंदर हमारे 2 स्टेटस हैं, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2. अब कैटेगरी 1 स्टेटस की बात करते हैं तो बेसिकली द कंपनीज जिन्होंने प्रॉफिट अर्न किया इन द ईच ऑफ द प्रीवियस 3 years, दैट मींस पिछले 3 साल में एवरी ईयर दे हैव अर्न सम प्रॉफिट, और उनका प्री टैक्स प्रॉफिट जो था दैट वाज 30 करोड़ और इवन मोर. एटलीस्ट लास्ट 3 में से किसी एक साल में 30 करोड़ या उससे ज्यादा का उन्होंने प्री टैक्स प्रॉफिट को अर्न किया. ठीक है, तो अगर ऐसी कोई कंपनी है तो उसको बेसिकली हम ग्रांट करते हैं मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस. और इसके अंदर बेसिकली हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इनको, दैट दे कैन टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अप टू ₹500 करोड़. वो 500 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकता है, 500 करोड़ या फिर अमाउंट विच इज इक्विवेलेंट टू इट्स नेटवर्थ. तो हर एक कंपनी को ये चीज अलाउड नहीं होता, बट द कंपनी विच इज अंडर द मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस ड्यू टू इट्स गुड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन द लास्ट 3 years, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया, दैट मींस दे आर एबल टू मैनेज देयर फाइनेंसेस आल्सो वेरी वेल. So that's why we give them some autonomy that okay, you can basically invest up to 500 crore rupees or equivalent to your net worth, and apart from that whichever is lower. तो यहाँ पर 500 करोड़ की लिमिट है, अपर लिमिट है, और उसकी नेटवर्थ की. तो जो भी चीज इसमें लोअर होगी उतने अमाउंट का ये कोई भी ऐसी डील साइन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है, इसके साथ वो जॉइंट वेंचर में भी एंटर कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स भी यहां पर कर सकते हैं विद द अदर कंपनीज. Okay, after that when we talk about the mini Ratna category 2 status, पहले था category 1, now comes the category 2. यहां पर सिचुएशन थोड़ी अलग है. यहां पर क्या है, अगेन पिछले 3 साल में उनको एक प्रॉफिटेबल वो कंपनी रहनी चाहिए, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. बट यहां पर अमाउंट थोड़ा कम रहेगा. पहले 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, यहां पर 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो
और 50% ऑफ देयर नेटवर्थ। तो प्लीज रिमेंबर कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, ठीक है। कैटेगरी 1 के अंदर क्या है, 500 करोड़, ओके, और उनका नेटवर्थ। अगर हम बात करते हैं कैटेगरी 2 की तो 300 करोड़ है और 50% ऑफ द नेटवर्थ। So in this manner we can retain it from the examination point of view. I hope everything is clear to everyone, right? I hope this is clear guys. बढ़ते हैं अपने next news article पर, that is the CII Annual Business Summit 2025. So Confederation of Indian Industry Summit has taken place recently in New Delhi, and during that one of our Minister Piyush Goyal has basically reflected on the key details about the Indian economy. And he has basically given a very important data, although the summit is not that important, but the data that he has announced during that particular summit, it is basically attracting the eyes, and that's why it has also been covered in so many newspapers, and it is important for us as well. Okay, so this is also PIB news article, and it has also been covered comprehensively in other news papers. So यहाँ पर ये न्यू दिल्ली में हुआ, इतना important नहीं है हमारे लिए. The second important part is about EFTA, that is European Free Trade Association. So the countries which are the partners, which are the members of the EFTA, they have committed to invest 100 billion in FDI into India over the next 15 years. ठीक है, बेसिकली जो EFTA कंट्रीज है, which includes Iceland, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, तो ये 4 कंट्रीज जो कि मेंबर हैं EFTA की, इन्होंने यहां पर कमिट किया है कि हम $100 बिलियन कलेक्टिवली इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के अंदर फॉर अ पीरियड ऑफ 15 इयर्स. सो $100 बिलियन की FDI आएगी. नाउ व्हाट एग्जैक्टली द FDI इज? FDI क्या है? इट इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो दोस्तों इसके अंदर क्या रहता है? When a person who is living in country A and person or a company who is of country A and it basically decides to invest in country B, right? और यहां पर जिस बिजनेस के अंदर ये इन्वेस्ट करने वाले हैं अमाउंट, right? They will also be having the business interest in that particular country. हो सकता है अपनी कोई सब्सिडियरी बनाए या अपनी ही कोई कंपनी यहां पर सेटअप करें, right? और they are basically having the majority shareholding or having the control over that particular business. So that is basically the part of the foreign direct investment. For example, अगर हम बात करते हैं, एक नॉर्वे बेस्ड कंपनी डिसाइड्स टू सेट अप सोलर पार्क इन गुजरात. $1 बिलियन सोलर पार्क वो गुजरात में सेटअप करती है और ऐसी कंपनी सेटअप करती है. सो दैट इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ओके, सो ये FDI $100 बिलियन की FDI यहां पर ये डालेगा 15 ईयर्स के पीरियड के लिए. दीज 4 कंट्रीज विच आर द मेंबर्स ऑफ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट it is expected to crystallize into $500 billion, क्योंकि with time what exactly it is going to take place is with time ये जो हमारी $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, तो ये हमारी $500 बिलियन की हो जाएगी ड्यू टू द मल्टीप्लायर इफेक्ट. और उसके साथ साथ एडिशनल उन्होंने $500 बिलियन basically this FDI will be attracting additional $500 billion and it will be making the complete ecosystem worth $1 trillion. तो 500 बिलियन प्लस 500 बिलियन विल मेक इट $1 ट्रिलियन. तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों. अब ये बेसिकली मार्क करता है पहला FTA इन द वर्ल्ड टू इंक्लूड सच अ फॉरवर्ड लुकिंग इन्वेस्टमेंट क्लॉज. अब ये FTA क्या है दोस्तों? दिस इज द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. तो बेसिकली क्या होता है, जब भी 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेड होता है, देयर इज द इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? बट इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द इनफ्लो of these goods and services, what happens is the people are basically required to pay the customs duties. कुछ import quotas रहते हैं, right? So basically एक unrestricted ये इनफ्लो रहे, यहां पर कोई भी ऐसे बैरियर्स ना रहे, इसलिए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाता है. इट कैन बी साइन बिटवीन द 2 कंट्रीज और बिटवीन सम ग्रुप ऑफ कंट्रीज. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो हमने इसको अच्छे से समझ लिया है. FTA क्या है, FDI क्या है, क्या अमाउंट रहेगा. अब बारी आती है इंडिया EFTA एग्रीमेंट की. तो इसको हमने 2024 में साइन किया था. हम ये मेंबर्स का नाम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो EFTA के मेंबर्स हैं जिनके साथ ये साइन हुआ है. अब सिग्निफिकेंस काफी इजी है कि 4 डेवलप्ड कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया ने ऐसा कोई पहला FTA साइन किया है एज द पार्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिक ब्लॉक.
ठीक है, और ये एक इट विल गोइंग टू बी बाइंडिंग कमिटमेंट एंड हैज बीन मेड फॉर 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट। सो इसके साथ साथ क्या होगा, 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स भी इंडिया के अंदर क्रिएट होंगी विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो कितनी जॉब्स होंगी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली द एफटीए अमाउंट, EFTA मेंबर्स, किस साल में ये FTA साइन हुआ है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इफ दिस आर्टिकल इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज गिव मी अ थम्स अप कि अब हम समझ पाए हैं चीजों को, दैट ओके व्हाट एग्जैक्टली इज अ डेटा। सी गाइस, जब भी आप कवर कर रहे हैं फॉर एनी एस्पिरेंट, इट्स हिज और हर टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द वैल्यूएबल एसेट, राइट। अगर आप उसको अच्छे से वाइजली इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो किसी भी इरेलीवेंट डेटा को याद करने में अगर इसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट इज द कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम। सो इसीलिए हमें हमेशा इंश्योर करना है कि हम ये चीज ध्यान रखें कि कौन सा डेटा हमें याद रखना है, कौन सा याद नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट देयर इज सम डेटा विच इज वॉलेटाइल इन नेचर, विच इज टेंड टू चेंज व्हेन योर एग्जाम विल कम। So we will be only remembering the latest data from the examination point of view. We will not be just retaining each and every data. No, just the latest data is really important. Okay, so I hope कि this is clear to all of you. बढ़ते हैं next part की तरफ, that is आयुष सुरक्षा पोर्टल। So आयुष सुरक्षा पोर्टल को recently launch किया गया to fortify consumer protection and regulatory oversight in the traditional medicines. You all know that there are so many traditional medicines which are available outside in the market, right? बट यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है कि उसका रेगुलेशन होना चाहिए, क्योंकि काफी बार हम देखते हैं लाइक व्हेनेवर यू एंटर इनटू अ बस, यू जस्ट सी अ पोस्टर विच इज इन द बस विच बेसिकली सेज कि 100% solution for diabetes, right? So such kind of over promising posters and such kind of medicines which also leads to some other diseases, so they are not at all good for the nation, right? For the health of the human resource, because we all know that right now हमारा जो human resource है, that is the most important asset for the nation. इसीलिए it is very important कि जो traditional medicines available हैं उनके ऊपर एक oversight रहना चाहिए, साथ साथ एक regulation होनी चाहिए। and for that आयुष सुरक्षा पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया, जो कि which is going to serve as the vigilant watch tower against this misinformation। और काफी बार क्या होता है दोस्तों कि whenever we see some kind of news articles and we see that over the social media that with the help of this particular medicine, this medicine got reacted and this was the result, right, of that particular medicine. So basically ऐसी जो खबरें फैलाई जाती हैं, such kind of news articles, they should also be verified कि क्या exactly ये reactions हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, what is the reason। If there are some kind of reactions taking place, then basically that medicine shall not be available in the market. So in order to ensure this Suraksha portal has been launched. So this platform will monitor misleading advertisements, track and analyze adverse drug reactions, facilitate real-time reporting and enforcement actions. So अगर मान लीजिए कोई misleading advertisement है तो उसको हमें combat करना है, then adverse drug reactions कहीं पर हो रहा है तो उसे track करना बहुत important है in order to ensure that people are healthy who have basically taken these kind of products, use them. After that, अगर मान लीजिए कोई भी चीज ऐसी हुई है तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो इजीली, उसके ऊपर एनफोर्समेंट एक्शन हो सके, तो ये काफी जरूरी है। तो इसीलिए आयुष सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया, जहां पर सिटीजन्स, आप में या कोई भी पर्सन, विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्टल दे कैन बेसिकली रिपोर्ट सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स। ठीक है, सो ये बेसिकली लॉन्च किया गया विद द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्ध। द पोर्टल अलाइंस विद द नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम। तो नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम के अंडर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड सिद्ध के साथ इसको डेवलप किया गया है। प्लीज रिमेंबर द नेम आयुष सुरक्षा पोर्टल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट? ओके, moving on to the next news article, that is a Dhruva policy document. So guys, in the previous article previous session we have covered Department of Telecommunication under the Ministry of Communication. It has come up with the initiative DigiPin and Know Your PIN Code, right? So उसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए एक ध्रुवा पॉलिसी डॉक्यूमेंट को रिलीज किया गया। What exactly Dhruva stands for? Dhruva stands for Digital Hub for Reference and Unique Virtual Address. ये जो हब, हम डिजिटल एड्रेसेस की बात कर रहे हैं दोस्तों, सो यहाँ पर इसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए और एक प्रॉपर पॉलिसी फ्रेमवर्क रहना चाहिए जिसके अंडर हम ये सारी चीजें, सारी एक्टिविटीज करें, इन एड्रेसेस को जनरेट करें, इनका यूजेज हो। सो दैट्स व्हाई ध्रुवा system, Dhruva policy document has been released by the Department of Post. ठीक है, and it basically aims to establish standardized geo-coded addressing system
इन आवर कंट्री सो दैट हमारे यहाँ पर जो एड्रेस का जो सिस्टम है, जो एड्रेस सिस्टम है, उसके अंदर जो भी चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको रिजॉल्व कर सके. सो वी कैन सिंप्लीफाई एड्रेस सॉल्यूशंस फॉर सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी ऑफ पब्लिक एंड द प्राइवेट सर्विसेज. पब्लिक सर्विसेज, प्राइवेट सर्विसेज दोनों ही अच्छे से हो और यहाँ पर जो भी हमारे एड्रेस प्रॉब्लम्स हैं उनका हम एक सिंप्लीफाइड सोल्यूशन निकालें, राइट, जिससे कि पब्लिक सर्विसेज में कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी रुकावट ना आए. ठीक है. सो ध्रुवा लेज आउट द पॉलिसी ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग डिजिटल एड्रेस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इसके लिए एक पॉलिसी ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करेगा ध्रुवा. इट विल इंप्लीमेंट स्टैंडर्डाइज्ड इंटरऑपरेबल जियो कोडेड डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम. तो पिछले सेशन में हमने ऑलरेडी डिटेल में काफी कवर किया था अबाउट द डीजी पिन, नो योर पिन कोड, कैसे चीजें काम करती हैं, राइट. देन इट प्रोवाइड्स यूजर्स विद द कंट्रोल ओवर देयर एड्रेस डेटा. दोस्तों आपका एड्रेस डेटा है, राइट, और आपका इस पे कंट्रोल होना चाहिए कि ये जो एड्रेस डेटा कैसे यूज हो रहा है, कहां यूज हो रहा है, किसने यूज किया. सो एवरीथिंग शुड बी इन योर कंट्रोल. इसीलिए इट इज गोइंग टू प्रोवाइड यूजर्स कंट्रोल ओवर देयर एड्रेस डेटा. इट विल इंश्योर ऑटोनॉमी अबाउट इट. कंसेंट ड्रिवन शेयरिंग होगी एंड देयर विल बी ईज ऑफ लिविंग फॉर द पीपल. टेंशन फ्री लाइफ. ठीक है, टेंशन फ्री लाइफ, क्योंकि अभी कहीं पर कोई चीज गलत तरीके से यूज नहीं की जा रही. ओके, फॉर दिस वी आर हैविंग द ध्रुवा पॉलिसी डॉक्यूमेंट. जस्ट रिमेंबर, ध्रुवा स्टैंड्स फॉर डिजिटल हब. डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस. हम एड्रेस की बात कर रहे हैं. कैसा एड्रेस है ये? वर्चुअल एड्रेस है और हर पर्सन का अलग होगा. दैट्स व्हाई इट इज यूनिक इन द नेचर एंड इट विल बी यूज्ड एज रेफरेंस. तो ये रेफरेंस और यूनिक एड्रेस का हमने एक हब बना लिया, राइट, और वो हब इज बेसिकली द ध्रुवा. So that's all from this part. Moving on to the next news article. Now we are moving towards the GA news articles, my dear friends, and here is the article on Shangri-La Dialogue, which is one of the basically Asia's premier defense and security summit, where the people across the world, basically Asia Pacific region के जो हमारे military chiefs हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, तो ये सभी यहाँ पर एक साथ आते हैं. दे विल एड्रेस द इश्यूज व्हाट दे आर फेसिंग, द चैलेंजेस व्हाट दे आर फेसिंग इन द एशिया पैसिफिक रीजन एंड दे ट्राई टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस. नाउ द शंग्रीला डायलॉग इज गोइंग टू टेक प्लेस इन सिंगापुर. तो यहाँ पर 22nd एडिशन होगा इसका सिंगापुर में. ये एक एनुअल इवेंट है जो कि हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज. तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज इसको हर साल यहां पर ऑर्गेनाइज करता है. ठीक है. अगर इंडिया की बात की जाए तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान बेसिकली वेंट टू सिंगापुर टू पार्टिसिपेट इन द शंग्रीला डायलॉग ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया. दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज आर्टिकल. मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल. सिक्किम एट द रेट 50. सो सिक्किम स्टेट हु गॉट द स्टेटहुड on 16th of May 1975, it has completed its 50 years, and in order to celebrate the 50 years of the statehood of Sikkim state, their government has basically celebrated this event with Sikkim at the rate 50 with the theme where progress meets purpose and nature nurtures growth. और 50 साल जो हमने मार्क किए ऑफ द स्टेटहुड ऑफ द सिक्किम, तो यहां पर इन्होंने कुछ पूरे साल कुछ ये इवेंट्स चलाने वाले हैं बिकॉज 50 years they have completed, राइट. 50 साल पूरे होने पे अंडर अ पर्टिकुलर थीम दे विल बी कंडक्टिंग ऑल दीज इवेंट्स व्हिच बेसिकली इज Sunalo, Samriddha and Samarth Sikkim. So that is the theme for these particular events which will be taking place throughout the year for celebrating 50 years of Sikkim state. ठीक है. अगर हम बात करते हैं सिक्किम की, क्योंकि सिक्किम काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों. क्यों? क्योंकि इट वॉज इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट. तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? NABARD aspirants. NABARD aspirants, please make sure that you are remembering this detail that Sikkim is India's first fully organic state. काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू. मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल. इंडियाज फर्स्ट 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव. तो ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव डिलीवर किया है इंडिया को बाय द सीमेंस इंडिया. ये इंडिया का पहला 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है एंड दिस वाज बीन फ्लैग्ड ऑफ बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली फ्रॉम द इंडियन रेलवेज दाहोद फैक्ट्री इन गुजरात. ये मोस्ट पावरफुल सिंगल यूनिट इलेक्ट्रिक इंजन है विच इज बीन डेवलप्ड फॉर द इंडियन रेलवेज. तो अभी तक का सबसे पावरफुल इंजन है जो कि बनाया गया है इंडियन रेलवेज के लिए. किसने बनाया? सीमेंस इंडिया ने. क्या इंपॉर्टेंट है? सीमेंस इंडिया. व्हाट इज इट्स कैपेसिटी? 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव. These two details are the most important ones. Next news article is of the Nomadic Elephant exercise. 17th edition of this annual exercise is been taking place, and this exercise basically held between India and Mongolia. We are talking about Nomadic Elephant. ठीक है. So M stand for Mongolia. तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में ये एक्सरसाइज होती है हर साल.
लास्ट ईयर उमरोई मेघालय में हुई थी, इस साल ये एक्सरसाइज होगी उलान बातर मंगोलिया के अंदर। ठीक है, एनुअल इवेंट है। बेसिकली हमारा जो इंटर ऑपरेशनल, हमारा जो कॉपरेशन है बिटवीन द डिफेंस सर्विसेज ऑफ बोथ दीज टू कंट्रीज, अगर कभी वी आर बेसिकली रिक्वायर्ड टू फाइट collectively against a common enemy, so we can do that. Okay, so इसलिए ऐसी डिफेंस एक्सरसाइजेस को कंडक्ट किया जाता है। So दोस्तों, with this we are just done with these important news articles of the last 3 days, and now we will be moving on to the MCQs. Why exactly MCQs are important? In the exam you see that the most of the questions are in the MCQs format. Your phase 1 is completely in the MCQ format. phase 2 के अंदर आपका MCQs भी रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रहेगा, राइट? तो इसीलिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्यों करते हैं हम ये प्रैक्टिस? सो दैट यू कैन सी वेदर यू आर एबल टू रिटेन ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स विच कैन बी आज इन द एग्जाम फ्रॉम दीज न्यूज आर्टिकल्स। तो ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है। कैसे एनालाइज करेंगे? थ्रू प्रॉपर प्रैक्टिस। सो यहां पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है दोस्तों ऑन द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, एंड एवरी डे आई बेसिकली टेल यू द अप्रोच दैट यू नीड टू यूज इन ऑर्डर टू answer such kind of questions. ठीक है, so Swachh Sarvekshan Grameen, first of all we need to identify what is the central topic. From the very first line it is clear. In the second line we need to see that what exactly we need to identify here. आप देख रहे हैं कि 5 ऑप्शन है और यहां पर 4 तो स्टेटमेंट्स ही दी गई हैं। So we need to identify about the 4 key components. तो कीवर्ड्स पर फोकस करना है, सेंट्रल टॉपिक पर फोकस करना है, कीवर्ड्स पर फोकस करना है, डिमांड पर फोकस करना है। तो की कंपोनेंट्स के बारे में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहली स्टेटमेंट SLP, सर्विस लेवल प्रोग्रेस, डिस्ट्रिक्ट सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट्स एंड ODF प्लस मॉडल वेरीफाइड विलेजेस। दिस स्टेटमेंट इज राइट। यस, दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट, एब्सोल्युटली राइट। सेकंड पार्ट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ सैनिटेशन स्टेटस ऑफ विलेजेस, एब्सोल्युटली राइट। थर्ड पार्ट, फंक्शनैलिटी असेसमेंट ऑफ सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, एब्सोल्युटली राइट। Then citizens feedback collected through a mobile application and the field service. What do you think? Which one of the following statements are right? Please tell me here. Yes, I can see in the chat box most of the people are giving me the right answer. Option E is the right answer. Yes, option E is the right answer. And my dear friends, can you guys tell me the mnemonic that I told you in order to retain these 4 components of the Swachh Sarvekshan Grameen? Can anybody tell me what exactly was that mnemonic? What exactly is that way in which, with the help of which you can retain this information? क्या वो तरीका था? I told you about SPOC. Who is the SPOC? For cleanliness. Service, physical inspection, observation, citizens feedback on the cleanliness. So with the help of this, we can remember and retain it for a longer period of time. Right? Is it really helpful for you? Please tell me in the chat box. Now moving to the next question, guys. Which Indian state under the aegis of Ullas Nav Bharat Saksharta Karyakram officially designated as fully literate, becoming the second state in the nation to transcend the prescribed literacy threshold subsequent to Mizoram? देख सकते हैं हम, ये जो थोड़ी सी लैंग्वेज है इस क्वेश्चन की थोड़ी सी टिपिकल बनाई गई है, तो देख कि पढ़ने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगी। ठीक है, और यहां पर पूरा हमें पढ़ना पड़ा क्वेश्चन को, उसके बाद जाकर वी कैन आइडेंटिफाई ओके व्हाट एग्जैक्टली द आंसर इज। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो अगर सिंपल लैंग्वेज में पूछेंगे विच स्टेट हैज बिकम द सेकंड स्टेट टू अटेन द फुल्ली लिटरेसी स्टेट इन आवर कंट्री, राइट? बट यहां पर अलग तरीके से पूछा गया है, अंडर द एजेस ऑफ उल्लास स्कीम ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फुल्ली लिटरेट बिकमिंग द सेकेंड स्टेट। तो थर्ड लाइन में जाके हमें पता चलता है कि कौन सी स्टेट की बात कर रहा है, सेकेंड स्टेट की बात कर रहा है, राइट? बिकॉज मिजोरम इज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड देयर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज गोवा। Moving to the third question on the Mini Ratna category 1 status on key defense public sector undertakings. तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस दिया। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, कौन सी स्टेटमेंट बेसिकली करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट। तो यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अगेन वी विल बी मूविंग ऑन टू द की इंपॉर्टेंट डिटेल्स। सो अब कीवर्ड्स पर फोकस करते हैं दोस्तों, राइट? द कंपनी इज ग्रांटेड मिनी रत्न स्टेटस ओरिजिनली पार्ट ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो मिनी रत्न स्टेटस दिया गया है, ओरिजिनली पार्ट ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, दे वर फॉर्म्ड इन 2021 फॉलोइंग कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ OFB इनटू द 7 DPSUs। हमने ऑलरेडी कवर किया कि 7 DPSUs बनी थी फ्रॉम दैट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 3 एंटरप्राइजेस करंटली ऑपरेट अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिसडिक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स।
So दोस्तों, it was not the Department of Military Affairs, and that's why right answer is option A, that is 1 and 2 only. So that's why this question right answer is option A. And I can see in the chat box that Kritika, Mukund, Sushmita, Harshad, Shanika, all the people have given the right answer. That's really good, guys, that all of you have given me the right answer. Moving to the homework question here. So homework question आपके सामने है दोस्तों, and here is a homework question on the Swachh Survekshan Grameen. इसका आंसर, if you really find yourself in that particular state that yes I can answer this question, तो सेशन खत्म होने के बाद वापस से जाइएगा इस क्वेश्चन पर, पूरा सेशन रिवाइज कीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन पर जाइए, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, कोई जल्दी में आंसर नहीं करना, आराम से सेशन खत्म होने के बाद फिर से देखेंगे, रिवीजन करेंगे 1.5x 2x पर, उसके बाद जाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. And the people who have answered the previous session's homework question correctly, the right answer was option C. And these are the star performers. So Arnav, Vishwajit, Anushka, Harish, Kamble, then we have Mani, Mitra, Akshita, Prerna. So these are all the star performers from the previous session. So I'm really glad to see your participation in this particular session, and it basically shows your dedication towards your dream of becoming the next officer. That's really good, my dear friends. And that was all from the today's session. And if you are still new to our YouTube channel, if you like our content, it's your decision whether you want to subscribe it or not, guys. But a very important part, अगर आप अगले सेशन में आ रहे हैं, अगले सेशन में जब भी आओगे इंश्योर कीजिएगा कि आज का सेशन रिवाइज करके आए. ठीक है, और आज का सेशन दोस्तों रिवाइज करने के लिए आपको चाहिए होगी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल पर के लिंक पर क्लिक कीजिएगा, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, डाउनलोड द पीडीएफ, रिवाइज द सेशन. Then I will be checking your analysis, your retention levels in the next session. So guys, it was really great to have all of you here in this part, and now it's a time for your queries. आप अपनी queries को chat box में पूछ सकते हैं. अगर आपकी queries different हैं, आप कुछ और mentorship guidance चाहते हैं हमसे, you can share your queries at hello@edutap.co.in. You can call us at 8146207241 as well. ठीक है. So Rohit is asking, sir, is this series important for IBPS and SBI? Yes, Rohit, it is important for your IBPS and SBI exam as well. So वो questions भी हम यहाँ पर cater कर रहे हैं. Definitely, it will be very helpful for your exam. Okay. So be it your regulatory body exam or the banking exam, this series is important for all these examinations. Okay. So that's it from the today's session, guys. And I can see that there are no more queries in the chat box. So that means that we can conclude this session. It was really great to have all of you here today in this session. Now I will be meeting you in the next session. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all happy learning.